And a very warm welcome to all the viewers of दूरदर्शन स्पोर्ट्स। दोस्तों मैं हूँ साक्षी मांडवाल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी क्रिक लाइव पर। We all know it's been one good ride in the ongoing T20 World Cup 2022 and the World Cup has finally come towards its closure. Well, almost, because we're all set for the two semi-finals and the big clash which shall be the finals happening very soon. लेकिन दोस्तों अगर मैं बताऊं आज हमारे शो में हम आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, तो हम बातचीत करने वाले हैं जो चारों टॉप सेमीफाइनलिस्ट हैं, यानी पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और इंडिया। इनके जो टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर्स अभी तक इस बार T20 वर्ल्ड कप 2022 में रहे हैं, हम उनके ऊपर एक नज़र डालेंगे और साथ ही उनके ऊपर थोड़ी बातचीत भी करेंगे। इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ स्टूडियो में स्वागत करना चाहूँगी हमारे दो बहुत खास मेहमानों का। हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं फॉर्मर इंडियन विकेट कीपर एंड अलॉन्ग विद हिम एंड also the assistant coach of Lucknow Super Giants in the ongoing Indian Premier League. We have with us Vijay Dahiya. Good afternoon. Namaskar Vijay. Good afternoon Sakshi. And उनके साथ हमारे साथ आज दोस्तों यहाँ पर जुड़ रहे हैं फॉर्मर इंडियन cricketer himself and also lover of the sport, lover of the game and a man who has a deep knowledge of the sport that we call cricket. I'm talking about Venkat Sundaram. Good afternoon, Venkat. Good afternoon. Good afternoon, viewers. Well, indeed, it feels good, first of all, Venkat, to see you from the radio to the television studios also, because बहुत सारे दर्शक आपको वहाँ पर भी सुनते हैं. And as we all know now, quickly just starting off the journey of the World Cup and talking about the first team that we shall be looking at, it's going to be the Kiwis. I'm talking about New Zealand. हम देखेंगे पहले कि Kiwis की तरफ से कौन से वो खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने अभी तक बहुत खूबसूरत प्रदर्शन किया है। विजय, लेट मी जस्ट कम टू यू क्विकली विद व्हाट आई टोल्ड आवर व्यूअर्स। आल्सो आई वुड वांट टू नो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूजीलैंड की तरफ से इस वर्ल्ड कप के अंदर आपकी नज़र में कौन से वो बैट्समैन और बॉलर्स रहे हैं जो स्टैंड आउट कहलाएंगे, आप उनमें कौन किसको जोड़ेंगे? देखिए, नामों पे तो हम जाएंगे जैसे शो चलता रहेगा। न्यूजीलैंड की ना, जो जब आप बड़े आईसीसी के मुकाबलों के बारे में बात करते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ सामने आती है ना कि टीम। जब न्यूजीलैंड के बारे में आप करते हैं ना, वो एज ए टीम खेलती है। आप हर बार हर कंपटीशन में एक ऐसा देखेंगे कि कोई एक नया खिलाड़ी आपको प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा। वो किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और अगर कोई नाम जो सबसे बड़ा है उनकी टीम में, जो उनके कप्तान है केन विलियमसन, उनका सबसे साधारण वर्ल्ड कप रहा है अब तक। लेकिन फिर आप क्रिकेट में कहते हैं कि अच्छा खिलाड़ी अपनी सबसे बढ़िया इनिंग से सिर्फ एक इनिंग दूर होता है, और जितने बड़े मैच होते हैं उतने उस समय आप अपने सबसे बड़े खिलाड़ियों की तरफ नज़र लड़ाते हैं। तो एक बार फिर ऐसा कोई स्टैंड आउट अगर आप देखें, एक या दो प्रदर्शन रहेंगे, लेकिन एज ए टीम खेलती है। एक जज्बा उनमें नज़र आता है, हमेशा अंडरडॉग रहते हैं जब भी खेलते हैं। लेकिन प्रदर्शन इस तरीके का कि अगर आप उस पूल की तरफ नज़र डालते हैं तो सबकी नज़र थी कि ऑस्ट्रेलिया आपको सेमीफाइनल में नज़र आएगा, लेकिन वहाँ से न्यूजीलैंड सबसे पहले क्वालिफाई करके आया। तो ये मैं उनकी सबसे बड़ी ताकत मानता हूँ और मैं उसका पूरा श्रेय इंडिविजुअल की बजाय टीम को देना चाहेंगे। और ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो किसी एक खिलाड़ी को पिन पॉइंट करके हाईलाइट करना आसान नहीं है। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेंकट, कि अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो दिस हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड टीम्स ऑफ द टूर्नामेंट, जो बहुत अच्छे से निकल कर सामने आई है, लेकिन फिर भी कभी उनको उस तरीके से श्रेय नहीं दिया गया जिस तरह से उनको मिलना चाहिए, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक दे हैव just gone into the semis and reached here and nobody really realized that they have reached the semis. No, that's not a very fair statement, I feel, because New Zealand, if you realize, won the ICC Test Championship. Correct. Yes. And last several tournaments, they have reached the finals, or they may not have crossed the line in terms of winning it. But they performed very well. True, agreed on that. And they're a dangerous team. Yes. They're an all-round team. They bat well. They're probably the best fielding side in the whole tournament. Not only this tournament, you see their fielding standards are very high. And their batting was always a little shaky earlier. But you can't say that now. They've got some very good batsmen. And if you notice, in the first match of the tournament against Australia, they shocked Australia. They out-batted, out-bowled, out-fielded them. And Australia were shell-shocked throughout the tournament and could never find their mojo again. Yes. So that's the capability of New Zealand. Yes. And as Vijay rightly pointed out, they play as a team. They're very committed. So that adds a lot to the quality of cricket that they play. So you wouldn't Vijay? वो एक चीज़ कहते हैं ना, टीम ऑफ चैंपियन की बजाय चैंपियन टीम है। हाँ, यस, ये बात तो आपने सही कही, लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में था, दिस हैड नथिंग टू डू विद न्यूज़ का जैसे एक्नॉलेजमेंट मिलता है मीडिया में, यू नो, पीपल गो गागा व्हेन वी टॉक ऑफ पाकिस्तान, व्हेन वी टॉक ऑफ इंडिया फॉर दैट मैटर, व्हेन वी इवन टॉक ऑफ इंग्लैंड फॉर दैट मैटर, न्यूजीलैंड ऑलवेज हैव बीन let me silently doing the good work. I agree with you,
And I'll tell you why. You might recall that they lost a final in the one day to England in the last over, which that over was full of controversial decisions, right? Correct. Many of them hit the back of the bat and went away. Correct. I was And then there was a covering that brilliant game. catch Yeah. by Yes. Stokes. We all remember that Yes. match. But what was the reaction of the New Zealanders? They just took it in their stride. Correct. They didn't overreact. They didn't jump and howl or scream or abuse or They were very calm about it. It's part of the game. That's how they took it. That's their sporting spirit. They come from a nation of great athletes, mountaineers. The first person to climb Mount Everest from New Zealand. So Hillary and others were icons of their era in the 50s. Then you had Peter Snell, who was a great long distance runner, 5,000 meters, world champion twice over. And you had so many good people there. So, it becomes their culture is such that they don't over dramatize their victory, and they're very humble. And if you notice, John Wright was the coach of the Indian cricket team. You never saw him talking, you never saw him, overreacting when we won or when we lost. So there was a sense of balance about the whole thing, and that seems to be their culture. Yeah. So therefore you feel they're underrated. Correct, and the dignity always speaks in silence and through the way they just play their game. अब एक नज़र क्विकली डालेंगे कि कौन से वो खिलाड़ी हैं कीवीज की तरफ से जिन्होंने इस वर्ल्ड कप के अंदर बहुत खूबसूरत प्रदर्शन। केन विलियमसन सरप्राइजिंगली हैज अ ह्यूज गैप व्हेन वी टॉक ऑफ द रन मार्जिन। 195 रन अगर हम देखते हैं फिलिप्स की तरफ से आए तो केन विलियमसन के सिर्फ 132, बट ओवरऑल आप देखिए highest score 104, 61 and 92 not out. These three batsmen, Vijay, have stood out when the occasions demanded, not necessarily in one game together. I won't say that about Kane Williamson yet. Okay. I'm like, जिस नंबर पे वो खेलते हैं, अभी क्या हमने देखे, वो रन्स देखे हैं, हाँ. वो स्ट्राइक रेट अगर देखेंगे और इम्पैक्ट अगर देखेंगे ना, आप जब T20 क्रिकेट के बारे में जब भी चर्चा करते हैं, नंबरों की चर्चा करते हैं, तो किस समय पे कैसे बनाए, उनका इम्पैक्ट क्या था, उसमें ग्लेन फिलिप के जो नंबर हैं वो स्टैंड आउट करते हैं। 2 मैच वो ऐसी जगह से जिताया उन्होंने अपनी टीम को जब ऐसे लग रहा था दे वर डाउन एंड आउट। सो उन इम्पैक्ट इनिंग्स में वो वहाँ पे हैं। कॉनवे जितना खेलते जा रहे हैं उतना इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी अपनी रेपुटेशन है, वो और ज़्यादा उसमें इजाफा होते हुए नज़र आया है। वो इस तरीके की खिलाड़ी भी हैं कि उन पे ये नज़र रहती है कि वो एक अगर स्टार्ट मिल जाता है तो फिर वो लंबी इनिंग खेल सकते हैं, लेकिन अगर एक आदमी का आप नाम लेना चाहें जो स्टैंड आउट हुए, वो ग्लेन फिलिप होंगे। वो ग्लेन फिलिप होंगे। आपकी नज़र में वेंकट, अगर मैं आपसे पूछूं, इन तीनों खिलाड़ी जो हमने अभी नाम लिए, चाहे फिलिप्स का नाम लिया, चाहे कॉनवे का लिया, चाहे केन विलियमसन का हमने नाम लिया, इन तीनों को क्या आप आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी समझते हैं कि इसके अलावा यू थिंक देयर आर अदर बैट्समैन दैट यू वुड वांट टू ब्रिंग टू हाईलाइट? You see, in T20 cricket, जी, the big scores don't matter always. Correct. It is the 20s, 30s, 40s that matter. That should be, what we call cameo innings. And if you remember the first match, again I go back to the match with Australia, Yes. Allen, Yes. he blasted the Australian fast bowler in the first 3 overs. Yeah. They scored, I think, 60 runs or 70 runs in the first 3-4 overs. Tremendous Now memory. that is a match-winning knock, Yes. and that set the tone for the whole World Cup for them. So you got these players who are very useful. You got Neesham there, you got Mitchell there, you got so many names. But who's going to click on the day and what his contribution is going to be, that decides whether you're going to win the match or you're not going to win the match. देन कल जी विजय, आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? नहीं, वो इम्पैक्ट की जो बात करें, एक आध इनिंग की जो बात करें ना, वो दैट मेक सेंस, लेकिन इस फॉर्मेट में ना आपके रोल बड़े क्लियरली डिफाइन है। कौन ऐसा प्लेयर है जो आपको इस तरीके का स्टार्ट देगा? आप जो लोग इस तरीके का स्टार्ट देते हैं, आप उनसे ये उम्मीद नहीं करते हैं कि वो एक बड़ी पारी खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो इतने रिस्क पहले पारियां खेली हैं उसमें, और फील्डिंग जिस तरीके की उनकी रही है वो फिनोमिनल रही है। तो उस लिहाज से, लेकिन हाँ, आपके पास इस तरीके के प्लेयर हैं कि ऑन अ डिफरेंट ओकेजन आपको डिफरेंट हीरोज़ नज़र आए इनकी टीम में। और गेंदबाजी को बिल्कुल आप नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि क्या है ना, घूम फिर के वी ऑलवेज से इट्स अ बैट्समैन्स गेम। You don't win tournaments or championship with batsmen. Bowlers will win you championships. Very important statement made over here that you do not win championships based on your batsmen, but actually it is the bowlers who make all the difference, and that is what we've also seen in the ongoing World Cup. एक नज़र डालते हैं कि न्यूजीलैंड के जो bowlers रहे हैं उनमें से top 3 bowlers कौन से रहे जो इस टूर्नामेंट में अभी तक शाइन कर पाए। And there we have it, Tim Southee, Ish Sodhi and of course Sander coming into picture. But ये आंकड़े अपने आप में काफ़ी कुछ बयान करते हैं। अगर हम देखें टिम साउदी का जो बेस्ट रहा है, वेंकट 3 for 6 रहा, but then again brings back the same point और brings us back कि ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑन अ गिवन डे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया होगा। ओवरऑल अगर आप देखते हैं
तो इनमें से किसके प्रदर्शन को एज अ बॉलर आप सबसे अच्छे से कहेंगे कि he stood out consistently? Form is question of the form on the day. So on your day you may have a good spell, you might pick up 2-3 wickets, things may go in your favor. Correct. You say you may bowl a good ball and not get a wicket, Right. or you may bowl a good ball and a catch may be dropped. And the economy rate may be very good also, by so the way. all these factors come in, but when you look at performance like Tim Southee, he's been playing for I think 2 decades now. Yes. And he's one of the senior pros on the tour. So he's vastly experienced. Besides this, you got a very dangerous bowler. Besides Santner, who's a left arm orthodox bowler. Now, if you notice, Ish Sodhi is a leg spinner. Correct. And in this, you've got you should also keep in mind that this Lockie Ferguson is one of the quickest bowlers in this whole World Cup, and he's dangerous. He comes in the middle and he can pick up a couple of wickets, and their fielding is outstanding. So half chances are held, run-outs are made, direct throws hit the stumps. We have seen how many matches are turned by just fielding. Rahul's famous pro, we remember. Yes. So these things make a big difference in the outcome of a match. And whether you're playing a semi-final or you're out at the qualifying stage is decided by the quality of fielding. Correct. And New Zealand, their bowlers feel twice as good because the fielding backs them. Yes, Vijay. And I think, when we talk about partnership in cricket, normally you associate partnership with batting. It's not only with batting, it's bowling as well. When you see these numbers, you are trying to understand that somebody must be bowling really well from the other end as well. Sometimes he's not getting that kind of wicket. Venkat has just mentioned about Ferguson. I'll just mention about Trent Bolt. You got Trent Bolt in their side. He's so lethal in first 6 overs. These two doesn't give you a flying star. Teams struggle against these two. And then Santner coming into the picture, you need to understand why, because the Aussie grounds are so big. When you have 2 spinners bowling in tandem, you will always have. And Santner, to me, Santner is a top class all rounder. He gets runs, brilliant fielder, very smart cricketer. But then Trent Bolt is the man who can fire on a given day. His 4 wickets recently stands out that the most crucial innings, अगर हम बात करें जो उन्होंने लिया और सामने की opposition को तोड़ना. Venkat, today they also have a very important game lined up for themselves. These are the batsmen and the bowlers you think who are going to be rising up to the occasion, or are we looking at collectively maybe more depth going into the batting and more bowlers rising up? It depends on the particular situation in the match. You can't sit here and say that so and so is going to do this or is going to do. Okay, these are the prima donnas, as they say, right? These are the main stars. But you also have the others. You can't rule out anybody in the 11. Somebody may have somebody may take an important catch, somebody may make a direct throw run out, somebody may score 10. You remember that Ashwin hit a 6 and a 4 in the last over, and India scored 185 instead of being in the 170s, and we won that match by 4 runs. So these are the type of things that differ. T20 is a different type of cricket. It's not that traditional. It's form on the day. In fact, it's form in that over in that particular ball. So that let me also tell you that Zimbabwe were called back to play that last ball, and the batsman missed the ball. Of course, yes, that's also happened. We've noticed that, and since we're talking that form is on a given day that we need to notice, a team जिसका नाम सबसे पहले मेरे ज़हन में आता है, who can actually show their form in a good way or a bad way on a given day is Pakistan. They can go any which ways on a given day. They're still the most unpredictable of the lot. They would be very happy and considering themselves lucky that they were able to make it to the semis quickly, Vijay. Pakistan is going to be the one in the folk a lot who are going to thank all the gods up there that they were able to make it to the semis thanks to just one team. I think ऊपर वाले का तो शुक्रिया अदा वो करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है उनसे ज़्यादा उन्हें हॉलैंड की टीम का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया, जो कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि नेदरलैंड्स साउथ अफ्रीका हरा जाएंगे. ये इस फॉर्मेट की ब्यूटी है, क्योंकि इस फॉर्मेट में क्या है ना कि आपके पास टर्न अराउंड टाइम, कम बैक का टाइम बहुत ज़्यादा कम है. But then again, पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो वेंकट, दे हैव देयर कंसर्न्स. अभी भी अगर हम देखें उनकी बैटिंग में अभी भी हम वो डेप्थ नहीं देख पाते कंसिस्टेंटली कि हम कह दें दैट कोहेसिवली दिस टीम is a good team. They have a lot of youngsters, but on a given day, collectively this team doesn't consistently still rise up to the occasion. Well, that's the nature of the beast. This But very T20 often cricket is luck such. actually coming, and what is the beauty? The luck comes to their aid. No, luck is different. Let's keep luck aside. In this format, you've been playing in the first half of the season in Australia. The wickets have been a little dicey for T20 cricket. It's not been easy. Fast bowlers have been ruling the roost. 60% of the wickets in this tournament have gone to fast bowlers. And therefore, the opening batsmen in all the teams have struggled till maybe the very last few matches.
And even there, if you notice, one or two have succeeded. Rahul has succeeded, one A, B, That is what Conway has exactly got me to succeeded. think, हाँ But जी, by correct. and large, the openers have failed. हाँ. It's the middle order that has carried teams through. And if you notice the Pakistan team, their top order has failed consistently. But their correct, middle order yes. has done well. Yes. They have won 3 matches in a row to reach the stage. Okay, a luck factor went in, but they've beaten teams. They've beaten Bangladesh, they've beaten Netherlands, and they've reached the stage by hook or by crook, as they say. But Thank they've you reached for it. putting that into perspective over there. And look, this is as I said, the nature of the beast. So Correct. they have played good cricket as well. They lost to India by 1 run. That match could have gone either way. Yes. So let's not forget that. Yes. So, and they lost to the other match to, I think it was After Zimbabwe. India, yes, Yeah, they yes, lost after By India, 1 run we again, came to a last Zimbabwe, ball. the second So, game, yes. these two could have gone in their favor, Correct. and they wouldn't be in the position they But are. as they say that cricket is a game जहाँ पे the game is not over until the last ball of the over has been bowled, and that is how it is. Since हम बैट्समैन की बात करें और पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की बात करें तो एक नज़र डालते हैं कि अभी तक इस ऑनगोइंग वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के वो कौन से 3 बल्लेबाज रहे हैं जो आउटशाइन कर गए पूरी टीम को, एंड दे स्टैंड ऑन द टॉप 3. And there we have it. मोहम्मद रिजवान, अहमद एंड मसूद कमिंग इनटू पिक्चर. ये 3 नाम हमारे सामने आते ज़रूर हैं विजय, बट इनके अलावा भी इस टीम के अंदर बहुत सारे और खिलाड़ी हैं जिनको हम कह सकते हैं, बाबर आजम की तो हम बात करेंगे, लेकिन जिनको कह सकते हैं कि ओवरऑल उन्होंने कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. कंसिस्टेंसी का अगर आप जिक्र करेंगे ना, तो जो पाकिस्तान की बैटिंग में सबसे बड़ी कंसिस्टेंसी रही है ओवर द ईयर, और वो भी वाइट बॉल क्रिकेट में खासकर, वो बाबर आजम और रिजवान ने जिस तरीके की शुरुआत की है, ओपनिंग हमेशा. जी हाँ बिल्कुल. जब आप इस तरीके की शुरुआत करते हैं ना, तो आपका मिडिल ऑर्डर इतनी जल्दी एक्सपोज नहीं होता है. अब बहुत बढ़िया पॉइंट बोला वेंकट ने यहाँ पे कि जिस तरीके की विकेट्स हैं वहाँ पे, ओपनर्स आर नॉट गेटिंग इनफ दैट काइंड ऑफ स्टार्ट, तो फिर किसके ऊपर प्रेशर आता है? वो मिडिल ऑर्डर के ऊपर प्रेशर आता है. और वो एक्सपोज भी हुआ है. आपको 2-3 रन ज़रूर दिख रहे हैं. देखिए मसूद जिस नंबर पे खेलते हैं, 3 नंबर पे खेलते हैं, वो भी आप टॉप ऑर्डर ही कहेंगे. लेकिन मिडिल ऑर्डर के अंदर अगर सिर्फ ऐसी पिचेस पे आप खेलें, सब कॉन्टिनेंटल पिचेस पे खेलें, तो उनके पास ताकत है. लेकिन वहाँ जहाँ पर बाउंस है, वहाँ पर पाकिस्तान की टीम को दिक्कत आई है. लेकिन उनकी सबसे बड़ी दिक्कत रही है अब तक, वो जो उनकी ताकत है या जिसको वो मानते आए हैं अब तक ताकत, वो उनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वहाँ, और बाबर के रन ना बनाना. बिकॉज बाबर इज़ अ टॉप क्लास प्लेयर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट. और कोई भी कंडीशन, कोई भी बॉलिंग अटैक हो, उनके पास इतना मादा है. लेकिन कहीं ना कहीं उस तरीके के स्टार्ट नहीं मिले, और अगर मिले भी हैं ना, तो एक्सप्लोसिव स्टार्ट नहीं मिले. ऑल्सो एक कंसर्न जो पाकिस्तानियों के लिए रहा है, वेंकट, यू कैन ऐड ऑन टू व्हाट विजय वाज सेइंग, बट ऑल्सो आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग, इज की गुड सॉलिड पार्टनरशिप्स हमें देखने को इनसे मिले ऑन अ रेगुलर बेसिस. वो सवाल हमेशा ओपनिंग बैट्समैन के ऊपर डिपेंडेंसी जरूर रही, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने टूर्नामेंट में देखा है कि पार्टनरशिप्स इनके बीच में इतनी स्ट्रांग नहीं बन पाई ओवरऑल. See, they are basically stroke players. The lower middle order is all full of players who are keen to hit the ball for 6, and they're quite capable of doing it, all of them. Shan, their fast bowler, Afridi, Shaheen Afridi, see the way he batted. He hit 15 runs in 1 over in the match against India. So, they're all capable of clearing the ground, and they're all strong guys, quite tall, and you got Roff. You got Harris Roff, now you got Mohammad Harris. All these people are capable of hitting the ball far. Correct. Wasim, another Shadab, they're all good hitters. Shadab played brilliant knock. Now, if you look at that team as a team, I would suggest if they want to surprise New Zealand, they should consider seriously a batting order change. Batting order change? Yes, I would suggest that Azam is totally out of form. He's struggling. Let him come little lower down. Let him come 1 down or 2 down, and let one of the guys go and attack like Lynn attacked the Australians. It might turn the whole game upside down. If he gets 20-30 quick runs at the start, they've got a start. They will score 150, 180. But that's a very big change to expect on a day of the semi-final clash. But that is what you need to do to win a semi-final. That is what you need to do to win a semi-final. You have to be courageous. He has a nice smile on his face. I want to zoom you on that. I think अगर आप क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हाँ बिल्कुल आप कुछ इस तरीके की चीज़ कर सकते हैं जो ऑपोजिशन एक्सपेक्ट ना कर रहा हो. लेकिन ट्रेडिशनली जिस तरीके की क्रिकेट पाकिस्तान खेली है, जितना प्रेशर बना है, उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि उन लोगों ने ऐसी क्रिकेट खेली है कि इतनी बड़ी स्टेज के ऊपर वो एक चांस लेंगे कि जहाँ पर ये कहें कि जो उनके प्योर रेगुलर ओपनर है, और सिर्फ रेगुलर ओपनर नहीं है, कप्तान भी है, तो वो वाला डिसीजन टीम मैनेजमेंट से ज़्यादा उनका खुद का भी हो सकता है कि और आउट ऑफ फॉर्म कौन सी बेस्ट जगह है उनके लिए रन बनाने के लिए. एंड माइंड यू
पहले 6 ओवरों में इस न्यूजीलैंड के खिलाफ रन बनाना इतना आसान वैसे भी नहीं होगा। ट्रेंट बोल्ट हैं आपके पास, साउदी हैं, सो दे हैव द गुड बॉलर्स, सो इट्स नॉट गोना बी इजी। राइट, ऑफ कोर्स। एंड इसके साथ ही हम अब आगे बढ़ेंगे और हम बॉलर्स के ऊपर भी एक नज़र डालते हैं कि पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक में कौन से वो 3 बॉलर्स रहे जो इस समय इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे ऊपर हमें दिख सकते हैं और रहे हैं। एंड देयर वी हैव इट, शाहीन शाह अफरीदी एक ऐसा नाम जो रहेगा ही रहेगा, मोहम्मद वसीम भी रहे, और उसके साथ हम बात करते हैं शादाब खान की। ये तीनों खिलाड़ी रहे। शाहीन शाह अफरीदी तो ऑलमोस्ट हैज बिकम द बॉलर वेंकट जिनके ऊपर ये टीम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुकी है। हमने वो इस टूर्नामेंट में भी देखा है। लेकिन मोहम्मद वसीम अनदर नेम दैट ही जस्ट टुक आल्सो अ व्हाइल बैक, एंड अलॉन्ग विद हिम शादाब खान, ये 3 इस टीम के लिए सब कुछ कर सकते हैं। Their bowling is world class. There's no doubt about it. They're the best bowling attack in the whole tournament, if you ask me. They got 4 real quick bowlers. Okay. Not only quick, they're 145, around that 145 range, but they've got control, they've got variations. They can bowl a yorker, they can bowl a short ball, they can bowl a slower one, they can bowl a leg break, they can surprise the batsman, even the set batsman. So they're a dangerous bowling attack, and they've got Shadab, who's a very wily leg spinner. He's a genuine all-rounder. 10 wicket ले चुके हैं यहाँ. So you know they cannot be underestimated as a bowler, but they're the worst fielding side in the whole tournament. Then that balances that But out. you know, but it's again question of that. It has been very cold and all. Now they say the summer is there. It's very warm, so maybe their fielding will improve, and they might do better. And if they field well, and their bowling clicks, it's going to be a very exciting match. And you can't ever rule out Pakistan. One thing I noticed was there were too many ifs in that. I'll come to Vijay with that also. कि do you stand with the same thought कि इनका जो bowling attack है वो अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर बेस्ट रहा है टीम या नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? इस टूर्नामेंट के अंदर नहीं, अगर आप करंट वर्ल्ड क्रिकेट देखेंगे तो उनमें सबसे बढ़िया बॉलिंग अटैक है उनका, उसमें कोई दो राय नहीं है। नवाज के अलावा ना अगर आप कोई भी बॉलर देखें उनकी टीम में, वो विकेट टेकिंग ऑप्शन है, और किसी और टीम के पास वो लग्जरी नहीं है कि आपका तीसरा चौथा बॉलर भी ऐसा हो जिसको आप विकेट टेकिंग ऑप्शन के रूप में देखते हो। सो दे कैन अटैक थ्रू आउट 20 ओवर्स। दिक्कतें कहाँ होती हैं टीमों को ना, जब आप ओवर निकलवाने की कोशिश करते हैं तो फिर आपकी विकेट लेने की जो सोच है वो दिमाग से निकल जाती है, और इस फॉर्मेट में वो डोमिनेट कर सकते हैं। पर अगेन वो जो सोच किस तरीके की रही है, आपने प्लेइंग 11 क्या की है, कप्तान देखिए, कप्तान का फॉर्म में ना होना ना उसकी कप्तानी के ऊपर भी उस चीज़ का असर डालता है, और कहीं ना कहीं ये बाबर आजम के साथ ये दिक्कत भी हो रही है उनकी कप्तानी के ऊपर भी कि उनके जो निर्णय किस तरीके से रहे। सबसे अच्छी चीज़ है कि उनके पास शादाब खान जैसे एक खिलाड़ी हैं, उन कंडीशंस के अंदर ऑलराउंडर हैं, 50 रन एक मैच के अंदर आपको बना के दिए। गेंदबाजी जब भी अगर आप देखें बाबर स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो वो सलाह लेके उनके पास भी जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कप्तान ही ऐसे निर्णय लेता हो, तो वो चीज़ उनके पास है। और जो प्रेशर फास्ट बॉलर्स बनाते हैं ना, उनमें वो स्पिनर्स इस तरीके के हैं कि कप्तान वो सोचता है कि मैं रन नहीं इस यहाँ से भी आउट कर सकता हूँ, तो ये ताकत उनके पास है। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करके 160-165 रन बना देगी, वो भी सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में, तो वो किसी भी टीम को, आप किसी भी टीम को कहिए, जैसी जो कंडीशंस हैं ऑस्ट्रेलिया में, जितने बड़े ग्राउंड हैं, वो किसी को भी तंग कर सकती है। तो उनकी बॉलिंग टॉप क्लास है, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक चीज़ जो बहुत अच्छी इसी बात में हमने देखी भी है वो ये भी है कि पाकिस्तानियों की अगर हम बात करें तो जो उनकी डेथ ओवर बॉलिंग रही है वो बहुत अच्छी रही है। दे हैव बीन वन टीम हु हैजंट गिवन अवे टू मेनी रन्स इन द डेथ ओवर्स, अनलाइक अगर व्हेन वी वर टू कम, अभी हम इंडिया की बात करेंगे, जो हमने नोटिस किया है, they've been able to hold their line length and most importantly their mind and thoughts together when it was needed in the death overs, Venkat. Well, you know, they're even more dangerous team now. Correct. Because when this tournament started, Shaheen Afridi was just coming back from injury. He had injured his knee, and knee injuries are very, very devastating. It can recur as well. So he was struggling in the first match. You know, 130, 125, he was bowling. Whereas now he's bowling at 140 in his first spell, 145. And the other thing I noticed in the last match, which was played in, I think, Adelaide for them, he was getting reverse swing. Now, when you get reverse swing with the old ball, it becomes very difficult, and that too at Yorker length, it becomes very difficult for the batsman to negotiate that. And because the batsman is in that last slog overs, he's trying to hit the ball and score fast. And to get a dangerous delivery like a Yorker, that too reverse swinging,
becomes very difficult to handle. Any batsman will struggle against that, leave alone a tail ender. Yes. और रिवर्स स्विंग के ना सबसे बड़ी काबिलियत रिवर्स स्विंग के लिए आपके पास पेस होना जरूरी है। हाँ, ये स्लो बॉलर्स रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कह रहे हैं कि यॉर्कर जिस तरीके के हैं, जिस तरीके से आखिरी में गेंद आकर ना एकदम से रिवर्स होकर गिरता है, उसके लिए पेस होना बहुत ज़रूरी है और वो है उनके पास। और एक और चीज़ है ये काबिलियत उनको कि वो बॉल को कितने अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखते हैं। और टीमें भी हैं पर कोई और रिवर्स स्विंग कराने में इतना कामयाब नहीं हो रहा जितने पाकिस्तानी टीम होती है। ट्रू, वेरी ट्रू। और अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं इस समय पाकिस्तान की और न्यूजीलैंड की, तो एक नज़र अब इस पर भी डालेंगे कि द रोड टू द सेमीफाइनल्स इन दोनों नेशंस के लिए कैसा है। एंड देयर वी हैव इट। पहला मुकाबला इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से जीता था, जिसकी हम अभी बात भी कर रहे थे, 89 रन से एट सिडनी। देन अफगानिस्तान का जो मैच हुआ था बारिश की वजह से वो रद्द हो गया था। वेंकट, quickly if you will walk our audience down also through what we are seeing on the screen कि न्यूजीलैंड का अभी तक का जो सफर रहा है। Well, they've also had their ups and downs, you know. They've also lost at Brisbane against England, and but you know, as a team, they can raise their game. That's the beauty of that team. You know, on the given day, if you play a semi-final or a final, you'll find them at their best, whether it's batting, bowling, or fielding. That is their quality, and this we have seen in tournament after tournament after tournament. So you know that's not easy to play, you know, because there's always what you call stage fright. You know, when you play a big match on a big occasion, even the best have, you know, what we call sweaty fingers, and you know, so nervousness comes in, so many other factors come in, external factors. But this team has always delivered the goods. They may have lost, but match was close, or they had their moments in the match where they could have won, and usually they capitalize on it. So it's a dangerous team. And I think they would have learned from their mistakes in this tournament, and you can expect them to be in top gear for this semi-final game today. Hopefully, yes, we will be expecting them to be in top gear. And I think एक चीज़ जो इनके लिए विजय बहुत अच्छे से वर्क कर सकती है वो ये भी हो सकती है कि ये टीम बहुत calm and composed रहती है प्रेशर के अंडर. They don't collapse, they don't fumble, they don't falter. And that is the biggest advantage that they have, New Zealand. आई थिंक वो फिर एक्सपेक्टेशन की भी बात हो जाती है ना कि उतने स्टार्स नहीं हैं। दूसरी टीमों के अंदर अगर आप देखें तो वो उस तरीके की रेपुटेशन भी कैरी करके थे। हम प्रोग्राम के शुरू में ही कह रहे थे कि इस तरीके का एक नेशन है और स्पोर्ट्स की हिस्ट्री है वहाँ पे। अगर आप देखें तो रग्बी में जो काम उन्होंने किया है, जिस तरीके से वर्ल्ड चैम्पियनशिप या रग्बी में वर्ल्ड में जो उनका रुतबा है, और क्रिकेट की तरह नहीं है रग्बी कि 7-8 कंट्रीज़ खेलती हो, एंड इट्स अ वेरी टफ गेम। और अगर आप उन कंट्री का जो सिस्टम देखेंगे और अगर उनके लिए बात करेंगे, ब्लैक कैप्स जिनको जो रग्बी है उनको कहा जाता है, तो वो एक ड्रीम है, एक एक बच्चे का ड्रीम है, और वो उनका नेशनल गेम रग्बी है उनका। तो ऐसा नहीं है, और फिर भी लो प्रोफाइल है। तो मुझे लगता है कि इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि वहाँ पे इतना स्टारडम आपको देखने को नहीं मिलेगा। यू माइंड योर ओन बिजनेस, जो रग्बी के बारे में बात कर रहा हूँ ना, उनके जो सुपरस्टार हैं मैच खत्म होने के बाद खुद स्टैंड साफ करते हैं, खुद अपना ड्रेसिंग रूम साफ करके जैसा होता है वैसा उसको छोड़ के जाते हैं। तो इस तरीके का ट्रेडिशन आपके यहाँ है। तो बहुत बड़ी ईगोज़ के साथ या बहुत बड़ी पर्सनल रेपुटेशंस के साथ अगर आप देखें ना, क्रिकेट के अलावा आते नहीं हैं। तो इस लिहाज से आपको वो सारी चीज़ें उनके साथ कम जुड़ती है। वो सुपरस्टारडम उनके साथ नहीं जुड़ता, इसलिए आपको उनकी गलतियां भी इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती हैं। so well put that was। एंड इसके साथ एक नज़र दोस्तों अब इस पे भी डालेंगे कि पाकिस्तान का अभी तक का वर्ल्ड कप कि अगर एक दूसरे को हरा देगी तो उनके 50% चांसेस हो गए जाने के। पहले मैच में भी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड था, अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाती तो उनके चांसेस हो जाते। यहाँ पर भी यही था कि इंडिया ने जैसे ही पाकिस्तान को पहले मैच में हराया, वहीं पाकिस्तान के लिए दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ गई थी, लेकिन वो और ज़्यादा उन्होंने बढ़ा ली थी जब जिम्बाब्वे से हार गए थे। और उसके बाद आई थिंक वो ना अपने से ज़्यादा, कई बार क्या होता है कि आप अपने प्रदर्शन के बजाय दूसरों के रहमो करम पे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान आखिरी तक आते आते जो साउथ अफ्रीका का मैच था ना, वो बहुत बढ़िया तरीके से जीते। और उन्होंने क्या किया कि जो चीज़ हमारे हाथ में हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यू कांट कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल। वहाँ से उन्होंने वो मैच, और उस मैच को जीतने के बाद एक और चीज़ उन्होंने की थी, जो उनका रन रेट था ना, नेट रन रेट, वो बहुत बढ़िया हो गया। बिल्कुल, वो बहुत बढ़िया हो गया। तो वो काम उन्होंने, उसके बाद वो वेकअप कॉल जो हुई जिम्बाब्वे के बाद, वो सब उन्होंने किया। लेकिन साउथ अफ्रीका अगर नहीं हारती तो ये आंकड़े जो हैं हम आज देख रहे हैं, रोड टू सेमीफाइनल शायद साउथ अफ्रीका का देख रहे होते। That is cricket, the beauty of the game out there and all the irony that you get to witness in cricket, because cricket इसीलिए ऐसा खेल कहा जाता है कि इस खेल में एक बॉल से कुछ भी हो सकता है, पूरी कहानी पलट सकती है। एंड क्वाइट क्लियरली वेंकट, वी ऑल्सो डिस्कस दिस एट लेंथ। हम पहले भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की अगर खास तौर से हम बात करें, do you really think that this is one of the deserving teams that should have been there in the semi-final? Okay, it is the truth that yes, they are there right now. But was this one of the deserving teams that needed to be in the semis?
Well, you can't rule them out. Let me put it that way, because as you rightly That's very diplomatically put. as you yourself said, it is a game of one ball can change the fortunes in the match. So this is a game of unpredictables. You see the type of upsets you've had. Netherlands beating A, B, C, Zimbabwe winning, Afghanistan almost beat Australia. They won last ball, they needed 4 runs. So it's unpredictable. This T20, because of the format, the odds are even at the start. Any team can beat any team on their given day, as we've seen in this tournament throughout. But Pakistan is a dangerous side. If they play to their potential, they've got highly talented players, batting, bowling, whatever you look at it, whichever aspect of the game. And if they get a little start, they will threaten any team and they can beat any team on their day. Well, we hope so. Yes, आपका सवाल था whether they are worthy to be there or not. I'll put it very simple. Yes, they are worthy. They're worthy? Absolutely. Absolutely. Okay, fair enough. They are worthy, no matter the luck that came into play, and all the luck gods came onto their side this time, with South Africa losing their game against the Netherlands and thereby putting its stamp on Pakistan to qualify for the semis. But let's not forget that they've also worked their way through to be over here, and that's how we can sum up that 2 deserving teams that you shall be seeing clashing today in the first semi-final. लेकिन अभी दोस्तों वक्त हो गया है कि अब सीधे चलते हैं और सोशल मीडिया की दुनिया में एक नज़र डालते हैं कि क्या चल रहा है in the world of cricket, especially on the day of the first clash of the semi-finals. And we'll start off first of all with Twitter to see what is happening when we look at the world of tweets coming up for you. And there you have Andrew McGlashan saying Babar Azam having a solo net at the SCG on the evening of the semi-final. New Zealand versus Pakistan. Stress, analyzation, introspection could be coming into play when we look at Babar Azam just having a day off at the nets for himself. Sanjay Manjrekar ne kaha hai, one of my big takeaways from the last Asia Cup was how brilliant a cricketer Shadab Khan is and what great value he adds to a team as an all-rounder. One of the best going around. Well, when we look at Shadab Khan, that has been one of our top bowlers also that we looked at today. That's what Sanjay Manjrekar had to say. Vikrant Gupta going on to say almost everyone talking about an India versus Pakistan finals at the MCG next Sunday, or should we say upcoming Sunday now. Friends, do remember though, India first need to beat England and Pakistan need to beat New Zealand to qualify to be in the finals. Not going to be easy. T20 World Cup. And Doordarshan Sports has tweeted that the 2022 semi-finals are up there now. New Zealand versus Pakistan, which is today. We bring to you live at 1:30 p.m. and India versus England, जो कि है नवंबर 10 को, यानी कल दोपहर 1:30 बजे से आप देख सकते हैं डीडी स्पोर्ट्स की डीडी फ्री डिश पर पूरे मैच का सीधा प्रसारण. And Shahid Afridi goes on to say, Babar Azam, we need firepower at the top with batters who are showing clear intent like Haris and Shadab. Please consider Harris opening with Rizwan, of course he means, and you one down, followed by your next best hitter. You should be rigid on winning the match and flexible on a balanced batting lineup. There we have the tweet out there by Shahid Afridi. The tweet by Shahid Afridi made me laugh because it was a moment where I just realized that exactly Venkat, जो आपने अभी बात बोली, there we have Shahid Afridi saying that exactly. I'm surprised, but at least there are like-minded cricketers thinking in the same way, because you have to take a gamble sometimes, especially in an important semi-final. Imagine 30 runs in the first over or 2 overs. Yes. It will completely change the thinking and the and to give that example, अगर आप देखें 1992 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, तब इमरान खान नंबर 4 पे बैटिंग करने आए थे, और ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई आग लगा रखी थी टूर्नामेंट में, लेकिन कुछ अलग चीज़ करनी थी. तब अगर कोई एक चीज़ आप वर्क नहीं कर पा रही है, तो you have to turn it around, you have to make a change, but you need to be bold enough to do that. World Cup he mentioned that was held in New Zealand and in Australia, and Mark was started with an off spinner against India, and he took the wicket of Shrikant in the first over.
and that completely changed that last minute match. change, of course उसी दिन का change हम कहते हैं एक It was तरीके से, surprising. एकदम on the बहुत day. 92 वाले वर्ल्ड कप में अगर आप देखें वाइट बॉल क्रिकेट में उस समय पे कोई इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन बहुत चेंज थे। न्यूजीलैंड ने दीपक पटेल के साथ गेंदबाजी की शुरुआत की, ऑफ स्पिनर मार्क रेडबैच आके पहले 10 ओवरों का फ़ायदा उठाना शुरू किया। कालू बुतरना और सनत जयसूर्या ने सारे डायनेमिक्स चेंज कर दिए थे वर्ल्ड क्रिकेट के। तो ये सारी चीज़ें 92 अगर वर्ल्ड कप की आप बात करें तो वहीं से शुरू हुई थी और ऑस्ट्रेलिया से ही शुरू हुए थे। करेक्ट। और अगर आज के मैच की हम बात करें तो जो चेंज यहाँ पर कहा गया है कि बाबर आजम को थोड़ा नीचे आने का सोचना चाहिए, well that's थोड़ा नीचे नहीं हो सकता, नंबर 3 से ज़्यादा नीचे नहीं आ सकते। third spot is what जी हाँ, the बिल्कुल, media जी हाँ, also बिल्कुल। said, but then that's again a big change. पाकिस्तान की हमने काफ़ी बात करी, we'll have to wait and watch to see after the toss that how things play out. लेकिन Venkat, I'll come to you and also talk about New Zealand के angle से, do you think any changes they require on this given day that we're talking of today, apart from how they have been throughout the continent? Well, I think New Zealand have got a fairly settled way of playing. To change that would be slightly difficult. They would, I mean, Allen, because Lynn Allen has been a dynamite. If he clicks at the top and gives them the type of start they got against Australia, but you know, this is a different attack. Australian attack is different. This Pakistan attack is totally Very different. It won't be easy. Yes. But if he can pull it off, why not? Well, if they can pull it off, why not? We'll have to wait and watch, because जैसे हमने आपको दोस्तों बताया भी है कि डीडी फ्री डिश के जरिए आप आज दोपहर 1:30 बजे से हमारा ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला दूरदर्शन स्पोर्ट्स पर तो देख ही सकते हैं। लेकिन हमने न्यूजीलैंड की बात करी आज, वेंकट एंड विजय, हमने पाकिस्तान की बात करी। 2 और नेशंस हैं जिनकी बातचीत हम कर नहीं पाए, लेकिन उनमें से एक को मैं जरूर उठाऊंगी, वो है भारत, इंडिया। हाउ कैन यू फॉरगेट दैट वी हैव द बिग सेमीफाइनल क्लैश टुमारो दैट वी आर लुकिंग एट अगेंस्ट इंग्लैंड, एंड इट्स गोइंग टू बी वन बिग गेम दैट वी विल बी लुकिंग एट 1:30 PM टुमारो। बट आई विल कम टू यू विजय, एनी पॉइंटर्स दैट यू थिंक कि हमें कंसिडर करने चाहिए, रोहित शर्मा को देखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ चेंज इन ब्रिंगिंग इन द स्क्वाड? आई थिंक द ओनली चेंज ही शुड लुक इन द मिरर। उनको खुद का जो अपना खुद का प्रदर्शन है वो देखना पड़ेगा। कप्तान, अगर हम पाकिस्तान के कप्तान की बात कर रहे हैं तो रोहित की जहाँ तक बैटिंग की बात करें ना, इंडियन टीम नीड्स हिम मोर एज अ बैट्समैन रादर देन अ कैप्टन एट द मोमेंट, एंड वी बीन सेइंग ऑल अलोंग दैट इन दिस वर्ल्ड कप you need a good start, and if he clicks, he's your match winner. There's no doubt about that. You know, sometimes what happens is you can criticize the performance, not the performer, and he's that kind of person. On a given day, he can take any bowling and attack apart. But if he comes on and if he plays well, you know, that'll be a bonus for our side. Of course, Rohit Sharma needs to get his form back, but what brings things to our advantage slightly is कि middle order हमारा इस समय बहुत strong हो चुका है and consistently occasion पे rise भी किया है. We have a Virat Kohli also coming back, and KL Rahul की भी वेंकट बात करी गई थी. Vijay has a very big smile on his face, which is distracting me right now because I want to ask him why is that. I'm like, everybody mentions Virat Kohli. Yeah, fair enough. But what about Surya? Yes, of course. Surya, no. Surya I is was the coming one. to that. Yes, Sky Right. को हम नहीं भूल सकते, but KL राहुल भी एक और नाम है जिनकी फॉर्म के ऊपर शुरुआत में बात करी गई थी इस टूर्नामेंट में भी कि you know people, fans, critics were hard on him to say that he needs to be ousted from the team. उनको निकाला जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा फेथ दिखाया जा रहा है, too quick to jump onto conclusions. But what it's good to see is that KL Rahul as an opener is also now getting his form back, or is in his form now. What we need from the man. No, there's no doubt he's a very fine player. Correct. Even the 250s that he's got were top class, full of good strokes, orthodox stroke. He's an orthodox player. He's not an unorthodox player. He's not a slogger. You mean traditional classical He's a classic batsman and a very capable batsman. Yeah. But and he's settled down, so I think he'll come. He's a good fielder as well. He puts 100%. So you need a guy like that in the team. But having said that, you know, we are playing against England, and England is a top team with with deep batting lineup. They bat till number 10, and they're aggressive at the top. With Butler is a very good player. He's got 100, and he's quite capable of taking the match away from you. Now, when you talk of what strategies, because the first 6 overs will decide how many runs they're going to get, and they're not very. First 6 overs will decide, sir. Yes, because you know that their openers are in good form, Hales and Butler. So and they don't play spin that confidently. Correct. So the thought that could be explored is, do we start or give at least 1 over or 2 overs to a spinner in the first 6 to hold them back, because that you so used to playing fast bowling and medium fast bowling and swing bowling that if they are off to a flyer, then it'll be difficult to contain them.
वेल ये तो कल फिलहाल वक्त ही बताएगा जब हम दूसरा सेमीफाइनल देखने वाले हैं। इस बातचीत को हम बहुत आगे ले जा सकते थे, लेकिन अभी थोड़ी सी समय की पाबंदी है दोस्तों, इसलिए विजय एंड वेंकट, थैंक यू सो मच, इट्स बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू इन द स्टूडियो विद अस टुडे ऑन CricLIVE. Thank you so much. And for all our viewers, thank you so much for tuning in to CricLIVE. And यहाँ से दोस्तों, you keep on watching